92 for 4. Now, in this contest now, thanks to this partnership, they are back in the contest and they push on here. Keen to continue. There's not a huge amount of turn. It's slow turn. Not easy to play your shots. We'll get back to that in just a moment because we have another 6 and that is exactly what they need, and that is another scholarship, I believe, from KFC. So we've got 2 6s now. Momentum is now going the way of Hyderabad. A touch too straight and a touch too full. Always looking to hit this over with the elevation. Pereira picks up his second 6. Looks like they will try and take Sufyan Mukim down here. Right, backup competition, we'll get there eventually. Starker edition, like and follow us Starker Batteries Facebook/Instagram page. To answer a simple question, get a chance to win exciting. Have a go. It'll be an exciting prize in a couple of hours' time if these guys can go over the line from being 4 down so quickly. A free shot outside leg stump. Under up, and boy have they done well. From 34 for 4 and seemingly out of the contest, that is a great effort, it really is. You can pick up from the keeper as well. One good ball because they really this partnership broken. बात कर रहा हूँ भाई लोगों, मैच सामने चला हुआ है. क्या होगा, कौन जीतेगा, मैं बताऊंगा. टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा. ब्लू कलर का लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो. 6 ओवर सेशन क्या होता है मैं बताऊंगा, 10 ओवर क्या होता है मैं बताऊंगा, लंबी क्या होता है मैं बताऊंगा, टॉस क्या होता है मैं बताऊंगा. ये मान लेना टेलीग्राम आ गए तो बहुत कुछ पा गए. फटाफट जाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिंड किया हुआ है. मतलब जन्नत देखनी है तो यहाँ आ जाना. आईपीएल आ चुका है, सिस्टम हैंग है. अगर एक भी चीज़ आपको अच्छी ना लगे, चैनल लेफ्ट कर लेना. इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती. तो जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. बाकी जितवाना मेरा काम, कमाना आपका काम. चलो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई लोगों. लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट. Because the batter changed hands, it won't be a wide. Also means it could be LBW if he's struck in front. Between the 2 batters, which is now the highest partnership by any Kingsman batters this season. This is their first season. This is what they can get to. Ideally, they look for something more than 10 and over. With J. Challenge, not just style. This is your shot at a crore. Create your video and tag it to j.fragrances.cosmetics, and then you have a chance to win. Don't forget to hashtag that. Win a crore with J. You have the ones by the crore. Lucky enough, I think a couple of seasons back,
to message him. Gone, 109 for 4. And straight away he's been welcomed. What a good stop that was from Bracewell. That ball was travelling off the bat of This is sensational. Hope he can pick up how far he runs. He's well behind square, out of shot. Sprints, dives, full stretch, and punches it first time in a nonchalant skip and a throw. Just tell how good a fielder he is and the reputation he has, and how nonchalant everyone accepted what was a brilliant piece of fielding. I think there's a big over context. And a few overs of, say, part-time. Gabriel Jamal is not part-time. This is an over that the batting team will target. first one hard, putting the pressure on the boundary rider. That's good running there. Some big boundaries. Such an important role these two are playing at the moment. We're just talking in that competition and discussing the fact that if you look at the Kingsmen, how they've been playing their games and losing too many wickets in the power play or not being able to take wickets in the power play. And you have a batter who's struggling in Saim Ayub at the top of the order, and then you have a fairly young Masadaga. So maybe one of them can push themselves up as an opener. Just provide that little bit of experience. We have cats there, dogs here. Because Kushal Perera is an opener as well. He can open. So putting your overseas pros all in the middle order just not helping them, because the start is getting so drastic. They're always catching up. Interesting. I think there's a real challenge and a problem with the selection of the team to begin with, squad. And then the next thing is you don't want to be chasing your tail in the middle of a tournament. So Sharjeel Khan came in and played a role in the middle at 5-6 previous game, got a score, then pushed up the order, searching for that solution. Good you mentioned Sharjeel. I mean, he's an opener, genuine opener. Played a lot of cricket here. That have already been won. This is for the young women cricketers in Pakistan who are getting hits from Pepsi. 47 have already been earned by them. More to come. I think the West team will be supporting. We hope the tournament goes back to the world quite quickly, and Multan Sultans every single game. The red hot form of the bat. Feel that they're trying to build this up between them as a partnership, but they need to keep an eye on the boundaries as well. 14 balls now since the last boundary. And if you want to get to that 180, somebody, like you said, they'll have to attack someone. Yeah, I thought this would be over that they'll take hours. Amshin is seemingly Michelle slightly he's been playing well. But you just need that other gear.
गपशप बात कर रहा हूँ भाई लोगों। मैच सामने चला हुआ है, क्या होगा, कौन जीतेगा, मैं बताऊंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ब्लू कलर का लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। 6 ओवर सेशन क्या होता है मैं बताऊंगा, 10 ओवर क्या होता है मैं बताऊंगा, लंबी क्या होता है मैं बताऊंगा, टॉस क्या होता है मैं बताऊंगा। ये मान लेना टेलीग्राम आ गए तो बहुत कुछ पा गए। फटाफट जाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिंड किया हुआ है। मतलब जन्नत देखनी है तो यहाँ आ जाना। आईपीएल आ चुका है, सिस्टम हैंग है। अगर एक भी चीज आपको अच्छी ना लगे, चैनल लेफ्ट कर लेना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बाकी जितवाना मेरा काम, कमाना आपका काम। चलो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई लोगों, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। Someone was that him? But he's wearing black shirt. Something at the top of his head that maybe shot. I didn't want to say that. 14 gone, 116 for 4. That's the soft dismissal. Don't know where he was trying to go with this, but it's just gone straight to mid-off. That's one thing that really didn't want by Kingsman, building up a partnership, getting a 50 on that, and suddenly we got to build everything all over again. So if you ever keep this is why you play wrist spinners. Googly again. He gets most of his wickets. Sharaful Islam thought he'd be the one with ball in hand, delivering it. He was the one accepting the catch. Not the best of starts from Sofiyama. A run of ball, 27 for the skipper, 116 for 5. They've found themselves in all too often, the Kingsmen. Just wondering
how far out in his depth, not the crease. But from a roll perspective, the skipper Barnislav Shane run a ball 27. No boundaries in this partnership. 17 deliveries, had to try to force his hand. Even then, isn't much of an option. Just asking yourself if they've planned well enough. Plethora of opening batters, all wanted to bat 1, 2, or 3. Having to put up first 6 position. This man has had a good score in this tournament so far. Lounge, one of the famous places in the cricket ground here in Pakistan. The Paldani are number 1 team in Pakistan. Talk about Kingsmen, they've taken up Jamaica Kingsmen now in the CPL. Yeah, well, this is a good entry point. Hopefully they learn from the mistakes they've made so far here. Easy to come in as a new franchise. You don't have the stalwarts, you don't have persons to lean on that are part and parcel of fabric and furniture of the franchise. So you have to build it from the inception. Jamaica has a rich history. They're successful in the CPL, so they would at least have something to start with. 15 gone, 119 for 5. Just past his spider cam, and you see short mid-wicket. You don't often see this in the death overs. You normally see fine leg up, mid-wicket back. They are so far ahead of the game. They're asking the Kingsmen batters to go across the line and over mid-wicket. Since we've seen a boundary. He's struggling at the moment. They did start getting things moving for them in that partnership. बात कर रहा हूँ भाई लोगों, मैच सामने चला हुआ है. क्या होगा, कौन जीतेगा, मैं बताऊंगा. टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा. ब्लू कलर का लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो. 6 ओवर सेशन क्या होता है मैं बताऊंगा, 10 ओवर क्या होता है मैं बताऊंगा, लंबी क्या होता है मैं बताऊंगा, टॉस क्या होता है मैं बताऊंगा. ये मान लेना टेलीग्राम आ गए तो बहुत कुछ पा गए. फटाफट जाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिंड किया हुआ है. मतलब जन्नत देखनी है तो यहाँ आ जाना. आईपीएल आ चुका है, सिस्टम हैंग है. अगर एक भी चीज़ आपको अच्छी ना लगे, चैनल लेफ्ट कर लेना. इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती. तो जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. बाकी जितवाना मेरा काम, कमाना आपका काम. चलो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई लोगों. लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट.
powerful, and a nice swivel. Desmond Haynes-esque leg in the air, adored by his teammates. More from him. Still got a big chunk of the last 4 overs after this, and you've seen sides scoring more than 70. They have wickets in hand, but Kushal and kind of form is showing he's trying. Niazi can also be that person who can put the ball all around the park. There you go. Nicely done. Thank you very much. That's exactly what I meant. They need a lot of that. Another maximum. This one from Niazi. Pace off picked and deposited. गपशप बात कर रहा हूँ भाई लोगों, मैच सामने चला हुआ है। क्या होगा, कौन जीतेगा, मैं बताऊंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ब्लू कलर का लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। 6 ओवर सेशन क्या होता है मैं बताऊंगा, 10 ओवर क्या होता है मैं बताऊंगा, लंबी क्या होता है मैं बताऊंगा, टॉस क्या होता है मैं बताऊंगा। ये मान लेना टेलीग्राम आ गए तो बहुत कुछ पा गए। फटाफट जाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। मतलब जन्नत देखनी है तो यहाँ आ जाना। आईपीएल आ चुका है, सिस्टम हैंग है। अगर एक भी चीज आपको अच्छी ना लगे, चैनल लेफ्ट कर लेना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बाकी जितवाना मेरा काम, कमाना आपका काम। चलो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई लोगों, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। It's gone way up in the air. This should be out, and a comfortable catch to the captain. Niazi trying to get on with things, just could not quite execute that shot. 6 wickets down now. That is a great timely strike this from the Zalmi. And Khan Niazi with the long levers has the ability to hit the long ball. On this occasion, just vertical miles up the air. Skipper with a comfortable catch. A 20-run partnership comes to an end. That is a great timely strike this from the Zalmi. And Khan Niazi with the long levers has the ability to hit the long ball. On this occasion, just vertical miles up the air. Skipper with a comfortable catch. A 20-run partnership comes to an end. Khan Niazi walks back for a run of ball 9, 136 for 6. Hassan Khan, the new batter, slick in place too. I like that. Attacking, trying to bowl them out. Hakeem's been excellent. It's been probably a little bit expensive if you're going to be picky, but he's got a couple of breakthroughs. Niazi trying to go wide over long off, or maybe even inside out over cover.
Oh no, he's gone. The big man is gone. Pereira, who was holding everything together, tries a cut shot, top edge, and is out for 58. What an over this is turning out to be. 8 for 4, the first delivery strikes to pick up Irfan Khan Niazi, and this one as well. Kusal Pereira's great knock comes to it and just felt it couldn't quite get the elevation. Just tried to hit it, got slightly top edge off it. Good catch by Iftikhar. A good knock with the context of the game. 34 for 4. They were 58 from 35 for Kusal Pereira tonight. Hyderabad being spent on 37 for 7. Work to do for the Kingsmen. Top spinner and out. Another one has gone down. Theekshana is the batter. He's got a smile on his face. I'm not sure why, because he's gone first ball. A spell to remember by Sufyan Mukim. What numbers? 4 for 32. 3 strikes in the over and back to back on this occasion. Catch that, please. Thank you very much. And good night. Sufyan Mukim absolutely loving this. 2 for first tonight. First for Iftikhar, then for the young Mukim. They've got Hyderabad by the scruff of the neck. 137 for 8. Into the onside. I'm going to take him on. He's taking him on. If it's a good throw, which just lacked a little bit of power in that throw from Bracewell out there. And the wickets are a problem. Yeah, the problem continues for the Kingsmen. Not the best shot selection either, but you got to give it to the spinners tonight. 8 wickets between them. 4 for a side. Sufyan Mukim with a bright smile. Absolutely loving his outing out there. Once again, Matt sways in the favour of the Zalmis. Yep, they're away from Bracewell on this occasion. The extra bit of bounce, the angle a bit too straight from Rana. Then try to hit this Hassan Khan. They need all the runs coming their way to the Kingsmen. Just a little swivel off that hip. Just helped it on its way. About 63 metres out that side, and the outfield is very, very quick. So good placement for valuable runs. गपशप बात कर रहा हूँ भाई लोगों, मैच सामने चला हुआ है. क्या होगा, कौन जीतेगा, मैं बताऊंगा. टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा. ब्लू कलर का लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो. 6 ओवर सेशन क्या होता है मैं बताऊंगा.
10 ओवर क्या होता है मैं बताऊंगा, लंबी क्या होता है मैं बताऊंगा, टॉस क्या होता है मैं बताऊंगा। ये मान लेना टेलीग्राम आ गए तो बहुत कुछ पा गए। फटाफट जाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिंड किया हुआ है। मतलब जन्नत देखनी है तो यहाँ आ जाना। आईपीएल आ चुका है, सिस्टम हैंग है। अगर एक भी चीज आपको अच्छी ना लगे चैनल लेफ्ट कर लेना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बाकी जितवाना मेरा काम, कमाना आपका काम। चलो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई लोगों, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। Yeah, confirmation, long way out, so they don't need run-outs at this stage of proceedings. 1:44 for 9. Nine down, the Kingsmen. Still plenty of deliveries left too. This was the last one. No, they've got to try and push things and get that total up to something that they think they can defend, but just rushing back for two. I mean, a great throw. And in the end, a couple of feet out of his ground. Yeah, Farhan Yusuf, great piece of work. Accurate on the throw as well. The pickup and release, very quick. Top stuff. Well, the Kingsmen could be worse than going out there and having a Tapal tea. Rouge. Number 1 tea brand, Tapal Danadar at the Tapal Tea Lounge. Certainly. Kingsmen, off you go. Tapal Tea Lounge. Refresh yourselves. Get a refreshing moment. Need a few more runs here. Just been single to finish the 18th over. It's 1:45 for 9. Two overs to go. Oh, big swing and a miss. Not sure how that missed off stump. Yeah, brilliant this. Ahmed with a delayed, extended reaction to that. Just whiskers away from that off stump. Stares down Hassan Khan and says, well, that was very, very close.
Yeah, great camera work as well, picking up reactions. Keeper first, then the bowler. Pulling straight, cries of catch it and take. Iftikhar, who did the damage with the ball, takes the final catch, and the Hyderabad Kingsmen are all out 145. Yeah, a shake of the head. Disappointing this will be for Manas Labuschagne and his men, putting into bat on the full, and a great catch on the boundary once again. So top-notch bowling effort for the Zalmi. Their outfielding, the catching, all been very good. And they wrap up the Kingsmen with 145 runs. To make matters worse, they leave a few deliveries out there. Opportunity to score. The wickets came very quickly in a period of 8 balls. Only 8 runs were scored, lost their 4 wickets. Last 6 wickets falling in the last 5 overs just for the 33 runs. Hassan Khan walks back for 9. Which means now the Peshawar Zalmi to bag another 2 points will require 146. Correct with that yellow dugout, that yellow contingent will be very pleased with this effort. Yeah, it was spin for Zalmi. 12 overs of spin that cost 79 runs but 8 wickets. So on a low, slow pitch, it was the pace off that did all the damage. So there is confirmation, the 2 spinners, 4 wickets each. Last wicket taken by Jamal, and a run out as well. Hussain Pereira was brilliant tonight, really played a lone hand, 58 off 35. But the Kingsmen lost their last 5 wickets for 9 runs. Hussain Pereira needed support, and it only came in the manner of that one big partnership with the captain Manas Labuschagne. 82 off 56, no real support. Looked like when Master of the order was getting off to a flyer, that partnership was 26, the second highest. Nothing really as apart from that 82-run stand to take home for the Hyderabad Kingsmen. Bowled out, remember, for 145. Yeah, confirmation of the bowling figures there, all quite tidy. गपशप A little bit बात expensive. कर रहा हूँ भाई लोगों, मैच सामने चला हुआ है, क्या होगा, कौन जीतेगा, मैं बताऊंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ब्लू कलर का लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। 6 ओवर सेशन क्या होता है मैं बताऊंगा, 10 ओवर क्या होता है मैं बताऊंगा, लंबी क्या होता है मैं बताऊंगा, टॉस क्या होता है मैं बताऊंगा। ये मान लेना टेलीग्राम आ गए तो बहुत कुछ पा गए। फटाफट जाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। मतलब जन्नत देखनी है तो यहाँ आ जाना। IPL आ चुका है, सिस्टम हैंग है। अगर एक भी चीज आपको अच्छी ना लगे, चैनल लेफ्ट कर लेना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बाकी जितवाना मेरा काम, कमाना आपका काम। चलो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई लोगों, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट। We're set for a big second half. Take a quick break. More when we return. चक्का हर बॉल तो स्कोर, हर बॉल तो रोला होकर कुछ करके विखाते, फट थोड़ी स्पीड से विकेट उड़ाते, मेरी जान स्ट्रॉन्ग इरादे, मैं धन में आग बिछाते, सर कुछ दिन आई कठिनाई, इस बीच में आखिरी बार
through this game between the Kingsmen and Zalmi, and Zalmi need 146 to win from their 20 overs from 7.3 runs per over. It's time for Walk with the Champions. Sikandar is down with one of Pakistan's modern day champions. वेलकम टू वॉक विद द चैंपियंस। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे साथ कौन है, तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप बात करें एक ज़बरदस्त कप्तान की, आप बात करें एक सेलेक्टिव या हेड कोच की, आजकल पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं एज बैटिंग कंसल्टेंट। मिसबा, मैंने सबसे ज़्यादा काम शख्सियत का अगर कोई मालिक है ना, मैं शायद आपको देखा है, चाहे 20 में 3 विकेटें के लिए भी हों खेलने के टाइम पे, या फिर आप कभी किसी क्रिटिसिज्म का जवाब देना हो, आप हमेशा अपने आप को कंपोज रखते हैं। ये एक खासियत होती है कि ऐसे इंसान की जिसको अपना काम पता हो। मुझे ये बताइए कि इतना अरसा क्रिकेट में गुजारा है, प्रोफेशनल क्रिकेट में भी, उससे पहले भी खेलते रहे होंगे, और आज भी मिसबा से आप जितनी बात करना चाहें क्रिकेट में कर सकते हैं। ये पैशन बरकरार रखना और उस बॉन्ड को, उस हंगर को हर डिफरेंट लेवल पर बरकरार रखना, इस पर क्या कोई ऐसा टोटका है, कुछ है, या इट्स जस्ट बिल्ड? मेरे ख्याल में लव फॉर द गेम है। अगर आप उसको वाकई आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं और आप उसको एंजॉय करते हैं, तो फिर आपके लिए वो कभी भी बोरिंग नहीं बनता। आप हमेशा उसको देखते हुए भी आपको मज़ा आता है, खेलते हुए मज़ा आता है, और आप उसमें इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। अगर आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम सिर्फ एक प्रोफेशन समझ के कर रहे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये सिर्फ वो उस वजह से अभी तक इंटरेस्ट चल रहा है क्रिकेट में। अच्छा, आपका करियर के अप्स एंड डाउन एक अलग किस्म के हैं। आपने ऐसे टाइम पे, एक तो बहुत लेट आपका इंडक्शन हुआ पाकिस्तान टीम में, फिर आप जब कप्तान बने तो एक ऐसा टाइम था पाकिस्तान ने अपने 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर खो दिए थे, और फिर वहां से सफर किया टेस्ट मैच तक। ये बताएं कि चैलेंज एक्सेप्ट आपने किया जब ऑलमोस्ट टीम रिवैम्प हो रही थी और सिलसिला स्क्रैच से शुरू हो रहा था? मेरे ख्याल में समटाइम्स आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से आपकी ब्रॉटअप ऐसे होता है, आपके थ्रू आउट कोई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि आप यूज्ड टू हो जाते हैं। तो जब आप शुरू से ही क्राइसिस और उस किस्म के हालात से गुजर रहे होते हैं, तो देन यू आर बेसिकली बिल्ड। वो चीज़ आपके सामने आती है तो आपको ऐसे लगता है कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, कि मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ठीक है, मुश्किल हालात हैं, बट जितने मुश्किल हालात होंगे उतना ही जब आप अच्छा करेंगे तो आपके लिए लोगों की अप्रिसिएशन, आपको सेटिस्फेक्शन, हर चीज़ बढ़ जाती है। तो यही मुझे लगता है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मुझे लगता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप जो है इसको करेंगे तो मोर सेटिस्फेक्शन। तो मतलब आपका कहने का मकसद ये होगा कि अगर हम गलत नहीं है कि जहाँ पे आपको एक चैलेंज मिले, आप फील करते हैं कि आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकलती है। आई थिंक एक जुमला था आपका, हो सकता है मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर रहा, कहीं आपने कहा था कि मेरी जिंदगी में 2 चीजें नहीं बदल रही, एक सुबह सूरज निकलना और दूसरा 20 पे कुछ विकेटें गिरी हुई हो। अच्छा, ये बताया कि टेस्ट चैंपियनशिप जीता, पाकिस्तान को मैच मिला, वो एक ऐसी फीलिंग ऑफ कोर्स पूरे नेशन के लिए थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वो फॉर्मेट है जो सब टॉप करना चाहते हैं। क्या वो आपका एंड गोल था? आपने सोचा कि अब ये हासिल हो गया, आई थिंक माई जॉब इज डन, या यू वांटेड टू जस्ट कंटिन्यू? देखिए, मैं जब 2010 में कप्तान बना तो एक चीज़ हम सोचते थे कि ठीक है, हमने T20 वर्ल्ड कप भी ऑलरेडी जीता है, हमने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है, अगर हमने नहीं बने तो हम वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट में नहीं बने। तो वहाँ पे जब हम इकट्ठे हुए तो एज ए टीम सारे लोग जो है वो इस चीज़ को, हमारी डिस्कशन होती थी यूनुस खान पे, उसमें असद शफीक, अजहर अली, जितने भी प्लेयर थे, कि यार हमने टेस्ट में नंबर 1 होना है। और वो सफ़र 2010 में शुरू हुआ और हम उसको फिर 2012 की इंग्लैंड सीरीज़ आई, वो एक स्पेशल हमारे लिए था कि इंग्लैंड में जो कुछ हुआ उसके बाद इट्स ए चैलेंज फॉर अस कि हमने वो एक एशेज, अजहर अली, जितने भी प्लेयर थे, यार हमने टेस्ट में नंबर 1 होना है। और वो सफ़र 2010 में शुरू, तो फिर 2012 की इंग्लैंड सीरीज आई, वो एक स्पेशल हमारे लिए था कि इंग्लैंड में जो कुछ हुआ उसके बाद इट्स ए चैलेंज फॉर अस कि हमने वो एक एशेज जीती हुई टीम आ रही थी, हमने अच्छा करना। वो करते करते फाइनली 2016 में जो हमने ख्वाब देखा था एज ए टीम, वो अल्लाह ने पूरा किया। दैट वाज मोर सेटिस्फैक्शन कि यार टेस्ट में अगर हम करेंगे तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि दुनिया में लोग जो है टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है हर कोई माना। अच्छा, लीडरशिप कोई फॉर्मूला नहीं है, या तो आप लीडर हैं एज अ पर्सन या आप नहीं हैं, आप अपने क्वालिटीज़ को आप पॉलिश कर सकते हैं। आपका कोई फॉर्मूला था जब पाकिस्तान टीम
मिल गई आपको और आप एज कप्तान आए, कोई पर्टिकुलर रजीम कोई फॉलो करते थे आपके मैं इस तरह लीड करूँगा, या आप जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, जिस तरह टीम फॉर्म होती जा रही है वैसे चलेगी? देखिए, मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी को मैंने हमेशा सीखने की कोशिश की है लोगों से, चाहे वो महल अजयवर्धने थे, स्टीफन फ्लेमिंग थे, या इमरान खान की कप्तानी थी, या MS धोनी फ्लेमिंग थे, या MS धोनी, उनकी चीज़ें पिक करने को। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कोशिश की कि मैंने किसी को फॉलो करना है। मैंने कोशिश की कि जो मैं नेचुरल हूँ, जो मेरी अपनी चीज़ें हैं, मैं उस तरीके से हाँ स्ट्रेटजी अच्छी बनाऊँ, सोचूं जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज करूँ। एक और चीज़ मुझे जो हेल्प की, मैंने हमेशा सोचा है कि एज ए प्लेयर जब मैं अंडर कैप्टनसी खेला हूँ, मैंने जब प्लेयर्स को डील करना है तो मैंने उनके शूज़ में जाके सोचना है कि जो भी सिनेरियो हो रहा है इस टाइम पे अगर मैं इनकी जगह होता तो क्या चीज़ वर्क करेगी। सो दैट हेल्प मी अलॉट कि हाँ जी उनके साथ मेरे रिलेशन या ऑन फील्ड या उनसे काम, वो बड़ा उसका मुझे फायदा हो। अच्छा, आपके साथ खुल के बात हो रही है, एक आपके साथ टैग लगाया था लोगों ने कि जी टुक टुक है। अब ऑब्वियसली जब 3 विकेटें गिरी हुई हो तो आदमी और जाके चक्के तो नहीं मारना शुरू कर देगा, लेकिन हर डिफरेंट सिचुएशन में आपके करियर में अप्स एंड डाउन, ये पर्सनल बात कर रहा हूँ, नॉट एज कैप्टन आए हैं, उनको डील करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? तो मैं वहीं जाऊंगा शुरू में इस इंटरव्यू के कि आपसे कभी कोई रिएक्शन नहीं मिला। लेकिन बात यह है कि मुंह से आप जो भी आप गेम खेल रहे हैं तो बेस्ट थिंग है कि आपने परफॉर्मेंस एज ए टीम देनी है, एज ए प्लेयर देनी है। आपने कोशिश करना है कि जो भी अगर आप पे बात कर रहा है उसको आप गलत साबित करें ग्राउंड के अंदर, और कोशिश करें। और फिर ये नहीं कि जो लोग कह रहे हैं वो आपने सुनना है। आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी टीम में आपका रोल क्या है, आप अपनी टीम को क्या दे सकते हैं। तो उसको देखते हुए आप चलेंगे, ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, तो देन समटाइम्स आप अपनी स्ट्रेंथ से आप जो परफॉर्म कर सकते हैं जो टीम को, वो नहीं दे पाते। तो मेरे ख्याल में आउटसाइड नॉइजेस उसको एनालाइज जरूर करें। कोई अच्छे के लिए बोल रहा है, आप सोचेंगे अच्छा ये ठीक क्रिटिसिज्म है, आई हैव टू इम्प्रूव दिस। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं टीम को ये ज़रूरत है और मैं ये कर रहा हूँ, तो आप फिर उस पर रहें और वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। परफॉर्मिंग आर्ट्स ऐसी फील्ड है जहाँ अप्स एंड डाउन आते हैं, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, लेकिन उसको डील कैसे करना है ये सब नहीं बताते। ये बताते कि जी आज ये सब कुछ है, शायद कल नहीं होगा। आपका डेब्यू हुआ, फिर काफी अर्से बाहर रहे, वो जो पीरियड एक प्लेयर गुजारता है आपको सुनना चाहिए, यंगस्टर्स के लिए खासतौर पे, कि आप अपने मौके का इंतजार करते हैं और फिर जब आए तो दोनों हाथों से उसको ग्रैब करते। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जस्ट थिंक अबाउट द कंट्रोलेबल्स। अनकंट्रोलेबल जो दूसरी चीज़ें हैं, मैं सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, कौन क्या करेगा, मेरी एफर्ट, मेरी परफॉर्मेंस, मेरी कोशिश वो मेरे हाथ में। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सोचना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, प्रोसेस पे मैंने फोकस करना है। मैं अगर बाहर की तरफ देखता रहूँगा तो जो काम मैं कर सकता हूँ सारी एनर्जी मेरी वहाँ वेस्ट हो जाएगी, मैं वो नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे ख्याल में जो बेस्ट चीज़ है अनकंट्रोलेबल, जो आपके हाथ में नहीं है चीज़ें, उसके बारे में अपने आप को मेंटली, ये जो मेंटल ट्रेनिंग है वो भी अपनी ज़रूर करें कि जो चीज़ करनी है, एफर्ट जो हमारे हाथ में उस पर फोकस करें, बाकी चीज़ों को इधर उधर क्या आ रहा है उस पर फोकस ना करें। एज एन ऑब्जर्वर टेलीविजन खोलते हैं, पाकिस्तान टीम की रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखते हैं, कहाँ आपको कमी नजर आ रही है? कोई ऐसी सिंपल सी चीज को पाकिस्तान रेक्टिफाई करे तो ये एक इमीडिएट सोल्यूशन हो सकता है। बैटिंग की बात करूंगा, देखिए इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली हम जो चीज़ें देख रहे हैं कि दुनिया की क्रिकेट, स्पेशली अगर वाइट बॉल की बात करें, तो बहुत ज़्यादा स्किल में डिफरेंस आता जा रहा है। हमें कोशिश करना है कि एक तो हमने मेंटली अपने आप को बेहतर करना है, डिसीजन मेकिंग अपनी बेहतर करनी है, और साथ साथ अपने स्किल को भी उस लेवल पे जहाँ पे दुनिया जा रही है। अगर आप देखें इतने लंबे स्कोर हो रहे हैं, तो हमने अपनी शॉट्स भी नई से नई परफेक्ट और डेवलप करनी है। बैटर्स अंदर आ रहे हैं और साथ ही बायर्स भी आ रहे हैं। आपसे हमेशा बात करके खुशी होती है, मजा आता है। गुड लक टू यू आपकी टीम के साथ, एंड ऑलवेज लवली टॉकिंग टू मिसबाह उल हक। वॉक विद द चैंपियंस, द मैन्स ग्रेट। What a legend, Misbah ul Haq. Love watching him play. Remember that moment at Lords where he did the press-ups after they'd been through a training camp. He got a brilliant hunt. I was there. It was fantastic view. It was absolutely brilliant. Just final words then. Yeah, they've got what looks to be an under par chase, but who knows? Pitch is not the flattest, it's not a belter, and they'll have to work hard at times. Bearing in mind that Hyderabad too have
plenty of spin options. Zalmi picked up what? They picked up 79 for 8 for spinners in 12 overs. They have 4 spin options, and it'll be very interesting to see how Marnus Labuschagne uses his resources. We've got quality players marching out to the crease. They want this, and they need another victory. They have just won from 2 games. The other was a washout. This is a little different here, so the challenge slightly different. Very good evening, Ruth. Evening, Nick Knight. Yeah, you say it quite rightly in terms of it being maybe just a subpar score, but you never know. They will still have to go along. We're not quite sure if any dew will come in. I'm still slightly skeptical because I can still see the bags fluttering. If that doesn't happen, it keeps those spinners in play, but they're up against a dynamic duo in the yellow. I would go Harris Khan. I would look to go left arm spin. Passing. Apologies. Against Mohamed Harris. The words jump. But Mohamed Harris has struggled against left arm spin, as has the man on screen. So a left arm orthodox wouldn't be a bad option against the 2 right-handers, but now we're going to go with that. Ace-on generally has been a little more easier to create a bit of fluency, but we will see. Oh, just announce yourself. Just pop this one out of the ground first ball. Pace a little easier to play than spin. What a start. Start in typical Mohamed Harris fashion. Doesn't even require a sighter. It's a length delivery and it's picked up and dispatched all the way for 6. So the 6 tally goes up. That is a sting strike for Mohamed Harris. Really enjoys numbers. Strike rate right up there in terms of HBL, PSL numbers. Right up there, right at the top, yeah. Nobody has a better strike rate, so perhaps that's a good time to say after a shot like that. Now content creation is finally bearing fruit. Ego Tell Pakistan giving every creator a chance to win big. PSL seized. Alright, Baba on strike. High class player. A lot of talk with Bubba about the strike rate. That is pretty irrelevant, actually, in terms of the overall picture here. But I don't think it's irrelevant in terms of the power play. You'll still need to try and power out of the power play. Quite sure what that is. Doesn't seem to be anyone wandering behind the screen. But that is about announcing yourself on the game. Yeah, you're right about power play numbers. Both teams in the power play in terms of their bowling go for a lot of runs. Over 10 runs and over is what both bowling attacks have gone for. Wasn't the case when Peshawar were bowling? Thinking they should be honest, get your spinners on. That's what I'm thinking. I don't know, maybe keep with your seamers for a little bit. Six should just be doing a little bit more. Right, selfie moment with Ego Tell's smartphone. Ego Tell Pakistan is the official smartphone partner this season. Smile. Beauty, absolute beauty. But just conditions might change a little bit. Certainly Zalmi are hoping so. Sliding on a little bit more, but it's an excellent delivery.
been the case. A little bit of zip, a little bit of movement, and generally see movement off the surface. Not a lot of elaborate swing, but we saw that on that delivery. The first one to Babar Azam. Just wonder, looking forward, and it's probably a little too early to say this, but we've got plenty of matches, put it that way, here on this ground for the next week and a half, 2 weeks. Looking at the practice wickets, they're coming through nicely. They've got a bit of grass on. I just wonder whether we could leave a little bit more grass on for some of the remaining games. Anyway, that's not for me, that's for the groundsman. Lovely shot, high class from a high class player. That's a good way to announce yourself too. It's the pace once again. Babar Azam, a touch player. Very good with that timing. Plays it a touch late as well. Allows the ball to come on. A hint of shape. And because he's watched all the way through, just guides it away. Nice boundary this. Yeah, stylish from one of the stylish men around there. For his sake and this opening pair, he will look to get big runs here, Babar Azam. Swing and a miss, no slip in place. Good start though for Zelmi. 11 from the first. Who's been very familiar with this role over many, many years. So no Hassan Khan. We wondered whether that might be a better option with the left arm orthodox and the right-handers, but Babashain sees it differently. Full for now. Ashwan Getter and Azal Mahmood cap the leading wicket taker. They will have their homes powered by Inverex solar energy, so that's a good incentive. Hassan Ali has the Mahmood cap. Leading edge. More effective against left-handers. Just that new ball in particular just gets it to just go away with the angle, but his economy a touch higher. So 9 runs in over, but 9 wickets last year. Mahesh Tikshana against left-handers. Right-handers, 6 wickets, but economy very good. Up and over. Lovely use of the feet just to open up that offside a little bit. Tikshana will know that Mohamed Harris is coming at him, and he's just going to have to make 1 or 2 adaptations to his field, and he's telling his skipper that right now. A very versatile player, Mohamed Harris, and just felt it got a little bit predictable. Darting it in, he's been moving around the crease laterally, giving himself room to open up the offside.
This time this बात ball कर रहा हूँ भाई लोगों, Good strike this. मैच Yeah, and now he सामने called it चला हुआ wicket है. in play, so क्या होगा, कौन जीतेगा, मैं बताऊंगा. टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा. ब्लू कलर का लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो. 6 ओवर सेशन क्या होता है मैं बताऊंगा, 10 ओवर क्या होता है मैं बताऊंगा, लंबी क्या होता है मैं बताऊंगा, टॉस क्या होता है मैं बताऊंगा. ये मान लेना टेलीग्राम आ गए तो बहुत कुछ पा गए. फटाफट जाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है. मतलब जन्नत देखनी है तो यहाँ आ जाना. IPL आ चुका है, सिस्टम हैंग है. अगर एक भी चीज आपको अच्छी ना लगे, चैनल लेफ्ट कर लेना. इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती. तो जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. बाकी जितवाना मेरा काम, कमाना आपका काम. चलो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई लोगों. लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है. A good battle that one. 2 gone, 17 for 1. Khan then, who has and does open the bowling in this format of the game. He's played for Melbourne Renegades and he did it on 3 occasions in the last Big Bash, so it's not an unfamiliar role for him. That is excellent from Big Shana. Just saw Mohamed Harris just move slightly leg side. He anticipated the game. Yeah, no, basically giving Bubba the sweep. He doesn't really sweep. And I'm surprised at that, having had such an illustrious career, that he still doesn't play the sweep that much. That's where he likes to play, through the offside. He plays with a straight bat, and Marnus Labuschagne is spot on with his field placings. Quick single, shouts of throw it, hit it. Gets off strike, Babar here. Now watch out for delivery number 5.2. It's Pepsi ball for a cause. Number of customized women cricket kits will be given out on the number of runs scored on that. So even if it is a dot ball, there will be 1. What you want is a 6. Similar field. Sweep is still on, a fine sweep is still on. And that's the line. It's a good field. It's an excellent field. Yeah, really like this because especially to Babar Azam, like you said, when you put his attributes down, you don't really put down sweep there. Now Mendes on strike. There is a fielder mid-wicket, 4 men on that ring, everyone very tight, not giving away that single.
the left arm spin working. Said Nick Knight, it's not an uncanny feature that he doesn't know. Hassan Khan, very used to bowling the new ball. It's a different challenge facing a spinner, orthodox spinner with a new ball, looking to hit straight as possible, skid it on. It's not an uncanny feature that he doesn't know. Hassan Khan, very used to bowling the new ball. It's a different challenge facing a spinner, orthodox spinner with a new ball, looking to hit straight as possible, skid it on. There's the sweep. Little finer would do nicely, but that's a good over. Just 2 runs from it, so a bit of pressure building. 19 for 1. Sadakat with the more left arm spin. So Marnus Labuschagne is right on top of his game at the moment. He realises conditions will suit his orthodox spinners. Start with the bat, but a chance to impress with the ball. Second time now bowling in the tournament, Sadakat. Keeps on with a left arm spin, in particular to Babar Azam. Now then, that's excellent from Baba because he did all the work again, a little bit like his partner Mohammed Harris, opening up that offside by staying leg side of the ball. Terrific batting. The way the bowling is coming along, they know. The way the bowling is coming along, they know. By and large, Babar won't go for the sweeps. So even if you keep it in line with the stumps, it'll be forcing him to give himself room on the leg side to open up the offside. Now then, long off. Falls back to the boundary. Yeah, that's good bowling. You keep it in line with the bit of cushion to himself. It was a short delivery. गपशप बात कर रहा हूँ भाई लोगों, मैच सामने चला हुआ है, क्या होगा, कौन जीतेगा, मैं बताऊंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ब्लू कलर का लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। 6 ओवर सेशन क्या होता है मैं बताऊंगा, 10 ओवर क्या होता है मैं बताऊंगा, लंबी क्या होता है मैं बताऊंगा, टॉस क्या होता है मैं बताऊंगा। ये मान लेना टेलीग्राम आ गए तो बहुत कुछ पा गए। फटाफट जाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिंड किया हुआ है। मतलब जन्नत देखनी है तो यहाँ आ जाना। आईपीएल आ चुका है, सिस्टम हैंग है। अगर एक भी चीज़ आपको अच्छी ना लगे, चैनल लेफ्ट कर लेना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बाकी जितवाना मेरा काम, कमाना आपका काम। चलो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई लोगों, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। Dot ball to start the 5th over.
content creation is finally bearing fruit. Big Hotel Pakistan giving every creator a chance to win big this PSL season. Arm ball. So a couple of dot balls. Buzzard Khan and Lisa Staleka alongside me. Welcome. Dot balls are going to be crucial, isn't it? When you've got such a modest total, can you put some pressure on? Fielders squeezing in from the inner circle. Ooh. Pick outside edge, but they scramble a single on this occasion. So they've been able to take 1 wicket. Kingsman, but I don't think they're going to be able to defend this total without bowling Xiaomi out. So they've got to try and keep creating chances, keep setting fields. Slow, very, very slow. And Barber did not panic at all. Got his spot. Yeah, waited for it. Got into position early, but then realized that it is slow and will come slow off the pitch. So just make sure that he flat batted it, past extra cover. Yeah, just had to make sure that placement was good. Down the track on this occasion, gets another single. So he's looking good. 20 off 14 now. Babar Azam really loves this ground here in Karachi. Out of all of the Pakistani players, he scored 1,973 runs, and the next best is Shoaib Malik at 1,400. Yeah, that's really nice. Picking up the length very, very quickly did Mendes, and puts it away for a 6 to finish the over. 42 for 1. 146 the target. Last over of the power play, and they've done well so far. Xiaomi and Kusal Mendes, the last delivery of the previous over, bang, 6 runs. Yeah, just too short. And off the back foot, it gives you ample time to go deep in the crease. Lightning, Jazz, 5G, Super 6. Oh, goes big, goes long, goes straight. Back-to-back 6s for Mendes. Yeah, smart shot. Just held his shape. It through the line nicely. Liked it as soon as he made contact. Eyes just on the ball. Just following through nicely. That's pulled away as well. This will be another boundary. Mendes is flying. Remembering this is the last over of the pack. Strongly indeed. The Fabulous shot down the ground, then just waited for it. And pops it over leg side. This is exceptional batting against spin. He's one down the ground, so he's expecting a little short of length delivery. Another sweep shot. Just a single. Go big or go home with life-size J. bottles. This is content swinging straight for a craw. Create your video, tag at j.fragrances.cosmetics. Use hashtag winacraw with J.
That brings Mendes back on strike, and I suppose the advantage for Mendes is that he knows Theekshana very well. Teammates, of course. Absolutely, and his strike rate against Theekshana is 148. 5.2 delivery was the Pepsi ball for a cause, went for a 6. So 6 kits for women's cricket donated. Last ball of the power play, turned away for a single, 56 for 1. गपशप बात कर रहा हूँ भाई लोगों, मैच सामने चला हुआ है, क्या होगा, कौन जीतेगा, मैं बताऊंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ब्लू कलर का लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। 6 ओवर सेशन क्या होता है मैं बताऊंगा, 10 ओवर क्या होता है मैं बताऊंगा, लंबी क्या होता है मैं बताऊंगा, टॉस क्या होता है मैं बताऊंगा। ये मान लेना टेलीग्राम आ गए तो बहुत कुछ पा गए। फटाफट जाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिंड किया हुआ है। मतलब जन्नत देखनी है तो यहाँ आ जाना। आईपीएल आ चुका है, सिस्टम हैंग है। अगर एक भी चीज आपको अच्छी ना लगे, चैनल लेफ्ट कर लेना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बाकी जितवाना मेरा काम, कमाना आपका काम। चलो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई लोगों, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट। Babar can almost bat as his will. He's best when he's not considering strike rate, not trying to force the pace. He's at his best. A touch. Maybe. Oh, I think he's done well. They probably have to look at a different angle. Seriously, if shoelaces touch it, should it really count? I think he's lifted his leg exceptionally well, timed it to perfection. The cushion doesn't seem to move until after the ball has left his hand. No, I think that's fine. I think it's fine. You can see that the shoe and his right leg haven't made any contact. Taps the ball back. No contact there. No contact there. Play on. Louis, I reckon you'd make a great third umpire. Just ask rock and roll it, please, director. Like the aggressive one though. Yeah, he's all about getting the job done quickly, I was isn't going to he? say, I guarantee you I'd be quicker with my decision. It may not be right, but it'll be quick. See, there we go. Out in front of his hand, leg spinner. To enjoy cricket with Pakistan.
Pakistan's #1 tea brand, Tapal Danadar, at the Tapal Tea Lounge. I reckon I'm just about due for a cup of tea, Lise. Off stump, and not bad footwork at all from Mendes, just couldn't find the gap. A very good player of spin. As a keeper, picks up length quickly, picks up the direction of turn quickly. Want to watch the match in stadium? Become a Pepsi super fan. DM a reel on Instagram at Pepsi Pakistan featuring Pepsi. Using Kalanj beat for the sound. What's that? For a chance to win. Hope I got that out all right. 7 overs gone, 61 for 1. Karachi, still plenty of action. Zalmi doing a pretty good job of this run chase so far. 62 for 1. There's the equation. 84 off 77. Still got 9 wickets in hand. And a part of a very good partnership at the moment between Mendes and Baba. Slow and wide. This is the situation that these players both love, isn't it? They've got now the blocks fairly quick. Partnerships 46 off 33. Required run rate is only 6.55. So now they can just start milking the singles. It is lofted, but in the gap and just the single. Yeah, I think they're probably in a situation where Mendes can still be, really proactive, and Baba Azam just needs to pick him off, really, run a ball. Yeah, Lisa, what about the net run rate? In control, but you would think that just press on the gas a bit. Don't know at the end of the tournament what will happen, so net run rate, go for it. I agree. However, we've got to remember that they've only played one game, really. It's almost like they need to start the HBL PSL again. So in their eyes, maybe it's all about getting another victory on the board. And then maybe if they get a little bit closer, maybe the 12th over, let's see where things are. You'd expect or you'd hope that they'd put their foot on the accelerator to try and get it completed as quick as possible. Just the single to finish that over off. 5 off, that over. 8 overs gone. 66 for 1. गपशप बात कर रहा हूँ भाई लोगों, मैच सामने चला हुआ है, क्या होगा, कौन जीतेगा मैं बताऊंगा।
टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ब्लू कलर का लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। 6 ओवर सेशन क्या होता है मैं बताऊंगा, 10 ओवर क्या होता है मैं बताऊंगा, लंबी क्या होता है मैं बताऊंगा, टॉस क्या होता है मैं बताऊंगा। ये मान लेना टेलीग्राम आ गए तो बहुत कुछ पा गए। फटाफट जाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। मतलब जन्नत देखनी है तो यहाँ आ जाना। IPL आ चुका है, सिस्टम हैंग है। अगर एक भी चीज आपको अच्छी ना लगे चैनल लेफ्ट कर लेना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बाकी जितवाना मेरा काम, कमाना आपका काम। चलो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई लोगों, लिंक डिस्क्रिप्शन और Just कमेंट। quietly building a little bit of pressure. You can see there from Marnus Labuschagne, that is what he brings to his captaincy. He for one moment will not believe his team can still win this game. And that is a big moment in the game. Pretty simple catch. That is the problem. Batting with fluency, not easy. Keep believing and maybe more simple catches will come your way. Right, Kusal Mendes then. It's a handy knock though, 27 from 23, 66 for 2. Michael Bracewell makes his way out into the middle. Can't strike the long ball, 163.89. The pressure on is really good for Marnus Labuschagne. Now field tight, very tight in terms of not allowing the single, a slip in place as well. Just away from that man inside. We say this, Rudy, a lot on commentary when we're not accountable. It's easy to say this, but this is definitely a time where he should be bringing up a fielder. Baba. I can't think that Baba's thinking anything, unless he gets a loose one, a short one or a full one. He's thinking about knocking it around, rebuilding the partnership. Unless he gets that loose delivery. Chance to build a bit of pressure on Baba, who's thinking about batting through the innings. Yeah, great work. This from Marnus himself. The only fielder on the offside that is tight in. You look at leg side, everything open. So big acreage out there. Right then, go for this. Come on, faster than that. Osaka battery power run. They're fully charged, just like a fresh battery. 100%. Good over this. Running start. Get your hands in there. Nick Knight, I think I can do a better job than that. Having said that, they'll put me on the spot, and next time you'll see me down there. Just volunteer. You're now going to definitely do it. Oh, good You've Lord. just volunteered. Oh, and then you have on. And we'll check out your running style. Oh, man. I've done myself. And then we'll have Nick Knight on commentary. Yeah. I'll be very kind. Thank you very much. Last 20 balls, no boundary. It was that period again. 16 deliveries had built up just for the 13 runs when they picked up that wicket off Mendes. A few more have added on since. Yeah, punches it down.
Easy single, very easy single there to Bracewell. 9 done, 69 for 2. Mahesh Tikala now back into the attack. Good to big throw from there. They're comfortable in the end. All dirty, ran hard. Not going to run now again, Bracewell. It's amazing how quickly your mind convinces you that you're in trouble a little bit when you just put a couple of dots in, just a couple of low scores, no balls, no boundaries for a while. It creates pressure in your mind. You'll try and bowl wicket to wicket. Try and stop any sort of whip. The equation is that as well. 75 on 3 would not create 7. What is that challenging? But the boundaries haven't come since 23 deliveries now. Well, that might be the first in a very long time. Boundaries haven't come since 23 deliveries now. Well, that might be the first in a very long time. Good option from Brace. It's a very, very clever for the boundary. Always a Kutte ka putar.